In phenol, IUPAC nomenclature is over. Preparation method: from haloarene, from benzene diazonium chloride, from benzene sulfonic acid, from cumene or isopropyl alcohol is over. Then after, in chemical property, acidic nature, ES reaction, Kolbe's reaction, Riemann-Tiemann, that all are over. Now we need to discuss just two small reactions, that is reaction with zinc dust and oxidation. Reaction with zinc dust, very simple equation. This you can say is reduction. Maybe in NCERT book, I think the heading is given reduction with zinc dust, not reaction. Here I have written reaction, but in your NCERT book it is written reduction with zinc dust. So what is happen when phenol is heated with zinc powder or zinc dust? Then its oxygen is taken by zinc, that is zinc act as reducing agent to gain the oxygen, oxidize itself to convert into zinc oxide, and phenol is by removal of oxygen convert into benzene. Only oxygen is removed out from there, hydrogen is remain there, so it form benzene. So this is the method for preparation of benzene. You can say it is in your previous class. ये आपके previous class में था, class 11th में. if you will see, hydrocarbon, alkane, alkene, alkyne, then arene. Then in preparation of arene means preparation of aromatic compound of benzene ring, you will see this reaction is given there. So this is reduction with zinc dust. And last is oxidation of phenol. Oxidation of phenol. So when phenol undergo oxidation, so for oxidation it require oxidizing agent. So here the oxidizing agent is acidic sodium carbonate. Acidic sodium carbonate. In alcohol, I have given the oxidizing agent two: strong oxidizing agent and moderate oxidizing agent. Strong was there acidic potassium dichromate K2Cr2O7, and acidic or alcoholic potassium permanganate KMnO4. Here the oxidizing agent is not potassium, it's acidic sodium dichromate. So what it will do? It will give the oxygen at para position. As you know, para is the major product, and release the hydrogen from here, and by rearrangement it form a new product which is called benzoquinone. Benzoquinone. Remember, it is not directly from benzoquinone. पहले this O comes in attach, then it form what? It form benzoquinol. देखिए this one quinol, पहले ये quinol बनता है, means diol, and after diol the new oxygen will comes from Na2Cr2O7 to remove the hydrogen. So by rearrangement process it form quinone. Quinol में है OH, remember this word quinol. It is having OH at two place, and quinone, quinone is having only oxygen at two place. This is quinone, not quinol, and its another name is diketone. It is also called diketone. So some of the time the question is asking with the name diketone. Diketone, it is having two ketone group. So when phenol treated with acidic sodium dicarbonate Na2Cr2O7, then it form benzoquinone.
or diketone. This is the oxidation. So these two equations were left in this, that is reduction of phenol. So phenol will be reduced with zinc dust, and oxidation of phenol. See here it is written diketone. Okay, oxidation of phenol that will be done by the acidic sodium dichromate, and this is the special one. This is the special one, that is acylation. Acylation. So in this, what is special? Not say acylation, balki I will say esterification. This is esterification. Esterification of, ठीक है, salicylic acid. ये स्पेशल क्यों है? वाई आई हैड गिवन इट सेपरेटली? बिकॉज दिस नेम एस्पिरिन. एस्पिरिन यू नो दैट इज पेन किलर. पेन किलर के लिए यूज होता है एस्पिरिन, ठीक है, एनाल्जेसिक कहते हैं जिसको एस्पिरिन. तो ये एस्पिरिन बनाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्जन में ये पूछता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू एस्पिरिन, और अनदर acetyl salicylic acid. Acetyl salicylic acid. Or maybe the question will be there, how we can prepare the aspirin from phenol. phenol से कैसे बनाएंगे? So first of all, that is Kolbe's reaction. phenol से salicylic acid, एंड salicylic acid का esterification. esterification में तीन चीजें आपको बताया गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, acid anhydride, or acyl halide. So here it is acid anhydride, CH3CO whole twice O, that is RCO whole twice O. So this is esterification of salicylic acid. Remember this. एस्प्रीन का स्ट्रक्चर भी आता है. If you will see the question paper, board question paper of 2018, then you will get the question is there. Write the means draw the structure and IUPAC name of aspirin, and this is very important for competitive exam also. वहां पे ये पूछता है डायग्राम इसमें से एस्पिरिन कौन है, या एस्पिरिन इज हैविंग which functional group, or what is the IUPAC name of aspirin, or aspirin is formed by salicylic acid by which reaction. इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है. Now after this, our phenol is completely over. After this, phenol is completely over. All the chemical reaction of phenol that we had discussed. Now I am going to start the ether. Now I am going to start ether. Remember, all the chemical properties are over, so it is over. Now I'm going to start the ether. Ether, that is the last part of this chapter. Last part of this chapter, that is ether, and its PDF I will send to all of you today. Ether. Now what is in ether? Let's see. Voice and screen both are clear? Please tell me. I had opened the next slide. Yes, sir, clear. Okay. So now see. Chapter name is alcohol, phenol and ether. Alcohol is completely over, preparation properties. Phenol completely over, preparation properties. Now last, the smallest one, that is ether. Now I'm going to start the ether. अब ether क्या होता है? Now see, the substitution of hydrogen atom in a hydrocarbon by alkoxy group C. ठीक है, that is alkoxy, aliphatic, aryl oxy, aromatic. So RO is called alkoxy, ARO is called aryl oxy.
सो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डिस्प्लेस्ड बाय OH दैट इज कॉल्ड अल्कोहल. When hydrogen of benzene ring is displaced by OH, that is called phenol. Now when hydrogen of, ठीक है, हाइड्रोकार्बन that is alkane or benzene ring is displaced by alkoxy group or aryl oxy group, means now hydrogen will be displaced by OR or OAR, then the formed compound is called ether. तब उसको कहते हैं ether. If it is written ROR, mean both the side alkyl group is there, open chain, then that is called aliphatic ether. Aliphatic ether like this CH3OCH3. And when one side is aliphatic and another side is aromatic, that is AR or benzene ring, then this is called aromatic ether. This is called aromatic ether. तो पहले ये जान लीजिए कि when hydrogen atom of hydrocarbon is displaced by or substituted by alkoxy or aryl oxy group, then the formed compound is called ether. Ether is of two types, as the other compounds are of two types. Aliphatic means haloalkane and aromatic means haloarene. Aliphatic means alcohol, aromatic means phenol. So same is here. If both the side alkyl group is present with oxygen, then that is called aliphatic ether. If one side alkyl group, one side benzene ring or aromatic, then it is called aromatic ether, and both the side aromatic, that is also aromatic. But in your syllabus this type is given, aliphatic, aromatic. Now ethers are, देखिए, two types, that is on the basis of the alkyl or aryl. ठीक है. Now symmetrical and unsymmetrical. ठीक है. Ethers are of two type, symmetrical and unsymmetrical. Now what is symmetrical and unsymmetrical? So ether is represented by ROR dash. ether को ROR dash से represent करते हैं. If R is equal to R dash, means the number of carbon in one side of oxygen is similar to the number of carbon in another side of oxygen. ठीक है. ऑक्सीजन के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मीन्स सेम एल्किल ग्रुप इज अटैच, सेम एल्किल ग्रुप इज अटैच, देन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर. एंड व्हेन both the side of oxygen having different alkyl group or one alkyl one aryl group, then that is called unsymmetrical. As you can see in this, both the side of O is C2H5 C2H5, so this is symmetrical. And in this, one side is C2H5, another side is CH3. One side is 2 carbon, one side is 1 carbon, so this is unsymmetrical. Or you can see this, one side is C2H5 alkyl, another side is C6H5 aryl, so that is also symmetrical. So ethers are of two type, that is alkyl ether, aryl ether, and next symmetrical and unsymmetrical. If both side, the R means both side of oxygen having same number of carbon chain, same group, or you can say same type of species, then only that is symmetrical. If different type of species, that is unsymmetrical. इसमें ये भी मत काउंट करिएगा कि one side is hexane 6 carbon means hexyl, another side is benzene 6 carbon. तो one side is alkyl, one side is aryl, so that is unsymmetrical. कार्बन ही हर जगह काउंट नहीं करना है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी काउंट करना है, means both side will be have the same species, then that is symmetrical. If having different species, that is unsymmetrical. Now
When the ether is symmetrical, then it is used di word in its common name. It is its common name, ethyl ether. Diethyl ether is saying that the ether is having two ethyl group means both the side is ethyl group. And if different are there, then in the common name it is written first alphabetical, then second one. जैसे ये आया methyl, this one is ethyl, so E come first, so ethyl methyl ether, it is common name. ether word आएगा तो common name, IUPAC name is different, जहाँ ether word लिखा वो common है. Now देखिए, common names of ether are derived from the name of alkyl or aryl group written as separated word in alphabetical order, adding the word ether. अगर अंत में ether लिखा है, so that is common name, not IUPAC name. And in ether common name, the name of both the side alkyl chain is written separately in alphabetical order. ठीक है, so in this one is CH3, one is C2H5, so one is methyl, one is ethyl, ethyl come first, E come first, so ethyl methyl ether means ऐसा ether, it is an ether in which ethyl and methyl two are present. So ethyl is present one side, methyl is present another side. You can write any one side to anyone, किसी भी साइड कोई भी लिख सकते हैं. O CH3 OC2H5 और C2H5 OCH3 both are similar. ठीक है Sir, yes sir, we do not have to separate ethyl and methyl. There should not be any space. yes space you can write there, no matter, you can write there space. Okay, Space sir. if you want you can write there, no matter, but don't place the dash or comma. डैश और कॉमा नहीं लगाना है, बाकी आप स्पेस दे सकते हो. एथिल पहले इथाइल लिखे फिर स्पेस मिथाइल ईथर, that is okay. Is that clear? Because common name is not using so much time, but don't place the comma or dash anything. ठीक है, ऐसा कुछ मत Okay, sir. लिखिएगा बस. And next, now IUPAC name. अब IUPAC रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया, इफ बोथ द एल्किल ग्रुप मींस इनसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो डाई वर्ड के साथ लिख देते हैं एक ही बार में. इसमें दो बार नहीं लिखेंगे एथिल एथिल मींस इथाइल इथाइल ईथर नहीं लिखेंगे. इथाइल इथाइल कॉमन है, डाई इथाइल, तो सिमेट्रिकल में डाई वर्ड लिखा होता है. एंड अनसिमेट्रिकल both the name are means separately written in alphabetical order, not in the on the basis of number of carbon कि इसमें एक कार्बन है तो इसको पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एथाइल पहले आया, चाहे 2 कार्बन हो चाहे 5 कार्बन हो, ई कम फर्स्ट तो पहले वो लिखेंगे. दिस इज कॉमन नेम, रिमेंबर दिस इज कॉमन नेम. नाउ व्हाट इज IUPAC name, how you will write the IUPAC name, देन इट्स IUPAC नेम का जो पैटर्न है, आपको पता है कि इन दिस द ऑक्सीजन इज अटैच विद 2 एल्किल ग्रुप. ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप से अटैच है. ठीक है, इफ बोथ आर सिमिलर, अगर R एंड R डैश बोथ आर सिमिलर, ठीक है, देन एंड इफ बोथ आर डिफरेंट, देन व्हाट आर द प्रोसेस. सो IUPAC नेम आपको पता है कि एक सिंपल सा सिंगल रूल होता है, उसमें बहुत ज्यादा रूल नहीं होता है. सो इट्स रूल इज स्मॉलर एल्किल, जो स्मॉलर एल्किल होगा उसमें ऐड करेंगे ऑक्सी एंड देन लार्जर एल्केन. स्मॉलर एल्किल ऑक्सी मींस इसमें 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, तो जिसमें कार्बन कम होगा, हियर वी विल गो विद द नंबर ऑफ कार्बन इन IUPAC में हम कार्बन के बेसिस पे जाएंगे. नंबर ऑफ कार्बन, जिसके पास कार्बन कम होगा उसका नाम पहले लिखेंगे ऑक्सी लगा के उसके नाम में. ब्यूट ऑक्सी, प्रोपॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है, पेंट
टॉक्सी, हेक्सॉक्सी। सो इस तरह से आपका ऑक्सी लगा देते हैं स्मॉल वाले में जिसमें कार्बन कम रहेगा। हियर वी विल काउंट द कार्बन, नॉट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड द सेकेंड वन, विच वन इज हैविंग मोर कार्बन, जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा उसका नाम एल्केन बेसिस पे लिखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। So this is for unsymmetrical, means where R is not equal to R dash। तब हम स्मॉलर वाले को लेस कार्बन कंटेनिंग चेन का नाम में ऑक्सी लिखेंगे और मोर कार्बन कंटेनिंग चेन नाम को एल्केन लिखेंगे, ANE सफिक्स। सिमिट्रिकल इज देयर, अगर सिमिट्रिकल की बात आती है, सो सिमिट्रिकल में व्हाट विल बी द पैटर्न? सिमिट्रिकल में बोथ आर हैविंग सेम कार्बन, तो किसी एक के साथ ऑक्सी, दूसरा नॉर्मल नेम, बिकॉज बोथ आर इथेन, सो इथॉक्सी इथेन, चाहे आप उसको आगे लिखे चाहे पीछे लिखिए। सो व्हेन सिमिट्रिकल इज देयर, किसी एक में ऑक्सी लगाइए और दूसरे को एल्केन लिख दीजिए। इफ अनसिमिट्रिकल इज देयर, तब याद रखना है कि स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन विल हैव ऑक्सी एंड लार्जर कार्बन कंटेनिंग चेन विल हैव द एल्केन। नाउ सी कॉमन नेम भी याद करिए, कॉमन नेम से देता है डाई मेथिल ईथर, सो इट इज सिमिट्रिकल। डाई वर्ड जहां लगा सिमिट्रिकल, डाई मेथिल ईथर मीन्स बोथ द साइड मेथिल इज देयर, सो दोनों साइड सेम कार्बन है, सो मेथ प्लस ऑक्सी एंड मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। फिर डाई एथिल ईथर, बोथ द साइड इथाइल, सो इथॉक्सी इथेन, बोथ साइड, चाहे आप इसको इथ पहले लिखे चाहे उसको, नो मैटर। बट इफ अनसिमेट्रिकल इज देयर, one side is one carbon, another side is 3 carbon, so its common name is written methyl and propyl ether। n is normal means its state chain में सारे कार्बन अटैच है, means methyl propyl, LMNOP, पहले M आया फिर P आया, so that's why first alphabetical order, it is common name। but in IUPAC name alphabetical order will not be there, number of carbon, so number of carbon, one side is one carbon, another side is 3 carbon, so जो छोटा कार्बन उसमें ऑक्सी, so methoxy and propane, methoxy and propane। next, one side is benzene ring, another side is methyl, so methyl is a smaller one, that's why methoxy benzene, and its common name is anisole, एनिसोल और मेथिल फेनिल ईथर, एनिसोल। अब याद रखिए बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या आपको बता दिया गया, बेंजीन रिंग इज हैविंग हैलोजन्स, देन हैलो एरेन, हैलो बेंजीन, बेंजीन रिंग इज हैविंग OH, बेंजीन रिंग के ऊपर OH आया, देन दैट विल बी फेनॉल, बेंजीन रिंग इज हैविंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आया NH2, सैंडमेयर में बताए थे एनिलीन, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OCH3 आया, OCH3, this is in your syllabus only, OCH3, then this will be anisole, so anisole means ether, aniline means amine, so remember this, so anisole का कॉमन नेम और क्या है, मेथिल फेनिल ईथर, फेनिल बेंजीन रिंग C6H5 को कहा जा रहा है, और मेथिल CH3, एंड IUPAC नेम मेथॉक्सी बेंजीन। सेम इसमें एथॉक्सी, ठीक है, बेंजीन, एंड OC2H5 को क्या दिया गया है, फेनिटॉल, फेनेटॉल, रिमेंबर दिस नेम, फेनेटॉल कॉमन नेम से ज्यादा आ सकता है आपका, स्ट्रक्चर न देके कॉमन नेम देता जाता, so this is IUPAC name, how you will write। now next, this I had placed here for just comparison, that what is the bond angle and what type of ठीक है structure is there in between the bonds of alcohol, phenol and ether। so in alcohol the bond angle is given 108,
in phenol, bond angle is given 109 degree, and in ether bond angle is given 111.7 डिग्री. सो सबसे कम बॉन्ड एंगल जो है वो किस में है? एल्कोहल में है. जबकि दोनों के पास, ठीक है, दोनों मीन्स ऑल थ्री ऑफ देम ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर. सब में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग का कार्बन है sp2 कार्बन. यहाँ फिनॉल में, ईथर में बोथ साइड कार्बन इज देयर, एंड इन एल्कोहल वन साइड कार्बन वन साइड हाइड्रोजन इज देयर. सो इसको बस याद किए रहेगा और कुछ नहीं करना है, किसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, और कुछ नहीं, इसमें कंपैरिजन है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ ईथर. So ether is prepared only 2 preparation method, 2 chemical property, and this part will be over. So ethers are prepared by 2 method. By dehydration, remember this word. This word was there in the alcohol chemical property, that is dehydration of alcohol. And second is by Williamson synthesis. Now another information, dehydration of alcohol is used to prepare only symmetrical ether. इससे केवल कौन सा ईथर बनता है? सिमेट्रिकल. एंड विलियम सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल बोथ. Williamson synthesis से symmetrical और unsymmetrical both can be formed. Remember this. By dehydration of alcohol, only symmetrical ethers can be formed. Why? अभी पता चलेगा. And by Williamson synthesis, we can form symmetrical and unsymmetrical both. So better one is Williamson synthesis. Out of these two, best one is Williamson synthesis. Now by dehydration of alcohol. By dehydration of alcohol. Before to start this, I want to remind you this topic was there in alcohol. ये टॉपिक आपके एल्कोहल चैप्टर में था, मीन्स एल्कोहल टॉपिक में था. और एल्कोहल में आपको बताया गया था कि फर्स्ट डिग्री रिक्वायर concentrated H2SO4 443 Kelvin. Second degree require 85% H3PO4 at approx 400 Kelvin, and third degree require, ठीक है, 20% H3PO4 at 368 Kelvin. ये 3 कंडीशन आपको वहां बताया गया था. सो सेम इज हियर. यहाँ पे आपको, अब आपको वहां पे क्या बन रहा था? दैट टाइम द प्रोडक्ट वाज एल्कीन. वहां पे अगर आप याद करेंगे, सो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, एनी वन इज देयर, दैट इज एल्कीन. बट अब बन रहा था एल्कीन, तो ईथर कैसे बनेगा? सो साइंटिस्ट हैव सीन कि इथेनॉल और एल्कोहल कैन बी अंडरगो in 2 different reaction at different temperature. केवल टेम्परेचर चेंज कर दे तो ये 2 अलग अलग रिएक्शन करेगा. इफ टेम्परेचर विल बी हाई, इट अंडरगो इलिमिनेशन रिएक्शन. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, विच यू हैव सीन इन एल्कोहल टू फॉर्म द एल्कीन, that is beta elimination. But if we will lower the temperature, अगर टेम्परेचर हम कम कर दें, then it undergo as an reaction, nucleophilic substitution reaction. Remember, so when alcohol heated with concentrated H2SO4 at high temperature, that then it undergo elimination reaction to form the alkene, that is dehydration. water इसमें भी निकलेगा. in this process water is removed out. in this process also water is removed out. दोनों प्रोसेस में वाटर निकलेगा.
That's why the name is common, dehydration. But please don't confuse. Why? आपका कंफ्यूजन तो होगा कि इसमें भी वाटर निकल रहा है, इसमें भी वाटर निकल रहा है, बट प्लीज सी, if you will see this screen, you will find in this water is coming from, means releasing from one molecule. वाटर एक ही मॉलिक्यूल से निकल रहा है, एक कार्बन से हाइड्रोजन, एक कार्बन से OH. But when you will see this one, in this water is removing from two molecule, means when two molecules are combined, then one water molecule is released. So इसमें water released from one molecule, hydrogen and OH both are released from one molecule. That's why it is elimination to form the alkene. But in this, means when we are going to decrease the temperature, then again water is releasing, but water is releasing from two molecule by the participation of two molecule. One molecule is giving the H, another molecule is giving the OH, not the same. So that's why it is SN reaction. So remember this, when alcohol heated at high temperature with concentrated H2SO4, it undergo beta elimination or elimination reaction to form the alkene. But when alcohol undergo, ठीक है, या heated with concentrated H2SO4 same but at low temperature, then it undergo SN reaction. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि alcohol is heated at 443 Kelvin, or maybe ethanol. In your syllabus ethanol is there, so it will take particular ethanol. When ethanol is heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, then it form ethene. But when it heated with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, slightly low temperature, then it form ether or symmetrical ether. Why? Because at high temperature it undergo elimination reaction to form alkene, but at low temperature it undergo SN reaction, nucleophilic substitution reaction. So this mechanism, so you have alcohol protonation, फिर formation of carbocation, then deprotonation. Now we will discuss the mechanism of this. So now we are going to discuss the next mechanism of this chapter. इसी chapter में सबसे ज़्यादा mechanism है. So here is the mechanism. Formation of ether, ठीक है, by nucleophilic substitution reaction, SN reaction, and SN reaction is of two type. So which type of reaction is this? That is SN2 reaction. First degree alcohol will be there. If alcohol will be second degree or third degree, then it's SN1. ये पैटर्न आपको पहले बताया जा चुका है कि SN1 के लिए third degree is the fastest, second degree is the slower, and first degree is the slowest. And SN2 के लिए first degree is the fastest, second degree is the slower, third degree is the slowest. So if first degree alcohol will be there, then this will be, ठीक है, follow the SN2. If second or third degree alcohol will be there, then it will follow the, ठीक है, SN1. ये इंफॉर्मेशन, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है. So you will write all these thing in note form. Now the three steps means the preparation of ether or diethyl ether, heading will be there. Write the mechanism of ether or diethyl ether or ethoxyethane. Ether, diethyl ether or ethoxyethane from ethanol. इथेनॉल से इथॉक्सीइथेन और डाइएथिल ईथर, इथेनॉल से इथॉक्सीइथेन
दैट इज IUPAC नेम, और डाई एथिल ईथर दैट इज कॉमन नेम। प्रिपेयर करने का सो इट अगेन कंप्लीट्स इन, ये फिर से 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, जो आप जानते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन,